Please continue, Atul bhai. Yes. રેવા લોજ વડોદરા, રોહિત લોજ અમદાવાદ અને જ્યોતિ લોજ મુંબઈના ઉપક્રમે આયોજિત ત્રિવેણી મંગળવાર મીટિંગના 14મા 3 ફેડરેશન ઓડિશા, મુંબઈ અને ગુજરાતના આજના પ્રવચન અરવિંદ ઘોષ અને રામકૃષ્ણ પરમહંસની સ્મૃતિમાં તેના વક્તા રંજનબેન વૈદ્ય, ભવાની શંકર મોહંતીજી અને કૃતિકા ગોયલ તેમજ આજની સભાના મોડરેટર શ્રી તરલભાઈ મુનશી તેમજ આજની સભામાં હાજર સર્વ સભ્યોનું સ્વાગત કરું છું. અર્ચનાબેન વૈશ્વિક પ્રાર્થનાથી આજની સભાની શરૂઆત કરાવશે. અર્ચનાબેન. O hidden life, vibrant in every atom. O hidden light, shining in every creature. O hidden love, embracing all in oneness, may each who feels himself as one with thee know he is also one with every other. Om Shanti Shanti Shanti. Thank you. આજની સભાની આગળની કાર્યવાહી માટે શ્રી તરલભાઈ મુનશીને આમંત્રિત કરું છું. તરલભાઈ, આપનું સ્વાગત છે. अतुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद. और आज का विषय सभी जानते हैं कि पिछले सप्ताह जो एक हम लोगों ने सोच थी कि अ डे ऑफ लाइफ एंड अ डे ऑफ डेथ, तो कोइंसिडेंटली 15 अगस्त यानी कल 150th बर्थडे था अरबिंदो जी का, और रामकृष्ण परमहंस का आज उनका मृत्यु दिवस है. तो ये दोनों ही दिन बहुत अपने आप में जरूरी हैं और होते भी हैं. तो उसके बारे में बहुत ज़्यादा न बोलते हुए मैं सीधा रंजन जी से मुखातिब होऊंगा. सबसे पहले रंजन जी का एक संक्षिप्त परिचय दे दूं. रंजन जी, आप एमए एलएलबी बीएड शिक्षा प्राप्त की. आप स्कूल की प्रिंसिपल रही हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में भी कार्य किया है, मैनेजमेंट ट्रेनर के रूप में भी कार्यशील रही हैं. साथ ही भारत के साथ साथ मॉरिशस में भी लेक्चर्स दिए हैं और रिसर्च पेपर भी विभिन्न विश्वविद्यालयों में प्रस्तुत किए हैं. आप संस्कृत की गोल्ड मेडलिस्ट रही है ऑरेटरी में, कई नाटक भी और अवार्ड्स भी जीते हैं, टीवी एंकर भी रही हैं, डांस डायरेक्टर भी हैं और मीरा और आम्रपाली जैसे नृत्य को आपने नृत्य निर्देशन दिया है. कई बार बेस्ट टीचर अवार्ड से सम्मानित हुई हैं और वर्तमान में थियोसॉफी को फैलाने के लिए इसके एक फेसबुक पेज बनाया है और अपना यूट्यूब चैनल भी है जिसे अमृतम के नाम से आप देख सकते हैं. और वह इसे अपना नेक्टर ऑफ लाइफ यानी जीवन का अमृत बताती हैं. आप रेवा लॉज बड़ौदा से जुड़ी हैं. रंजन बेन, आपका स्वागत. Thank you, Tarul bhai. जी. I bow down to Narayana, residing and presiding in every heart of our audience. Ramakrishna, whom we call Thakur out of reverence, can be literally known through Gospel of Ramakrishna, as his inner being is beyond our reach. These people don't live on surface. Before that, kindly pardon me, I had cough, cold and fever. So little bit difficulty with the voice. Sorry for that. We console ourselves by knowing the glimpses through various means. His amazing oneness with deity Mahakali surprises us, and he may be declared insane in West, as he cannot stand the IQ of West, like Kabir and Nanak, they also cannot do. Once, he lost patience, as after worshipping for days, he did not have her vision. He took the sword and tried to cut his throat. And oh, at the third second, when he was about to attack, great form full of light and joy and wisdom appeared
and he lost his consciousness and was immersed in the form. Examples of his universal consciousness are bloodshed on his back when he was on the bullock cart. That man was whipping the bullock, and later on one could see that the same shades were seen, bloodshed was seen on his back, so much one with universal consciousness. And getting menstrual periods means that Ramakrishna, he used to follow all the religions one by one. When he was fakir, he used to have green clothes, etc. And when he was worshipping Durga, Ma Bhagavati, then he had menstrual periods when practicing as female during his practice of all religions in return. When president of Theosophical Society challenges him, Dr. Sen, regarding existence of God, he hugged him after each argument, saying that his intelligence was proof of his existence, and thank God for sending him. Thanked him for sending God, thank God for sending him. Sen wrote in his diary as he was sleepless that night that something from far above had touched him and would learn from him. When Narendra, that is Vivekananda, asked him about God, he threw him on the ground and kept his foot on the chest. Narendra was immersed in Nirvikalpa Samadhi. He was serious, he was anxious to meet Narendra, as he knew that he was one of the Saptarshis and had come with a mission. Thakur told his disciples that if Narendra again demands Samadhi, he would quit his body. So he had locked his experience, and it happened so. Actually, in 1893, Ramakrishna's mission, Thakur's mission through Vivekananda was completed when he addressed gathering in Washington, D.C., America. As Thakur was so much immersed in Brahman that every time while talking or giving lectures, he went to kitchen and asked Shardamani Devi at what kind of food is made. But Shardamani Devi once asked how childish it was to do like that. He answered that in order to continue his body, because he was already immersed in Brahma, who could leave the body. But he says to continue his body, he had adopted this means, this method to survive. So this was his technique, and told Shardamani Devi that whenever he stops asking for food, he would immediately die after 3 days. And that thing happened in his life. Actually, Ramakrishna was connected to Aurobindo in this way that when Aurobindo is on Alipur jail, under the excuse of bomb blast by Britishers, Ramakrishna appeared 3 times before Sri Aurobindo and told him, Maundir Gado, Maundir Gado, Maundir Gado. You build a temple. Surprisingly, his disciple Swami Vivekananda also came to Sri Aurobindo for 15 days. And he actually described Sanatana Dharma, explained Sanatana Dharma to him because his father, Krishnavardhan Ghosh, did not want Aurobindo to know about Indian culture, and that's why he was sent out of India. So Swami Vivekananda came, and later on Lord Krishna explained to him Srimad Bhagavad Gita. So this is how it happened to Sri Aurobindo.
Ramakrishna's famous story, he liked to say this story so often, that there were 4 people and there was a big wall. So one of them he tried and he saw behind the wall and he said, oh, and came back. Second one also went there and said, oh, and he came back. Third one also, and fourth one also. And so he said that someone enlightenment boils out to Brahman. If someone knows Brahman, then he starts keeping silence. He is mauna. He can't describe his achintyam, avyaktam, avyavaryam, agrahyam, alakshanam, achintyam. So this is what Sri Ramakrishna was. According to this recent news, we all must have seen yesterday Aurobindo's contribution to Indian freedom movement. I'm so lucky today that 150th birthday of Sri Aurobindo birth anniversary and 75th anniversary birth anniversary of our independence coincided. Actually, on 15th August, also when freedom was granted, Sri Aurobindo said that this is my gift from God. Because when he went to jail, he asked Krishna, why I am sent to jail? Because I have to free my India. Krishna said that India is destined to be free, but you are destined to do something else. And that's why you are in jail to know so many things, and then you will proceed to some other mission, which I am going to guide you. So actually yesterday I also declared when small book I released on Way to Supermind. And today I would like to have glimpses from that book itself. Because his life is also not on surface according to him. His inner life is to be known. His outer life has 3 phases. Brilliant career as student in England, political career, and that of yogi par excellence. His smile was simple like that of a child. As limpid and sweet, wrote his Bengali teacher. Who could have thought, he wrote that, Bengali teacher, he says, who could have thought that this bronzed young man, clad in a common coarse Ahmedabad dhoti, on his old-fashioned slippers, was no other man than Mr. Aurobindo Ghosh, a living well of French, Latin, and Greek. Taralbhai, please let me know when my time is over. After enough of intellectual gymnastics, prestige of intellect for Aurobindo was gone. Temples did not interest him. He refused yoga initially. He had no trust in yoga initially. But what is yoga? When one sits down to meditate, we feel torrents of thoughts like frightened, aggressive rats. Endure it, and slowly pressure turns into veritable current which descends. Actually, I was also very skeptical for years as to how can there be collective yoga, sit together at particular time and disperse at a particular time. But when I was the principal at Nargol near Sanjan, Bombay, we had a samadhi. And one German couple, they went to terrace and we were meditating. They had a photograph. In the photograph, total complete golden light was there. Being Westerner, he thought that this must be a mistake. But he referred to the world's best photographers. And they all said it was a golden light. So that is why it is his yoga is of ascent and descent. So that thing descends. We draw from above. And in the midst of our work,
it becomes massive force, which is transforming force, guided directly by wisdom of the spirit to universalize our entire being. And that is the basic experience of Sri Aurobindo's yoga. Normally, we have Kundalini coming from down up, but he believes that let there be pure light from above. That purity, if it descends, then that kind of madness and other things that we normally see when Kundalini is, is aroused, that thing is eliminated. Gradually, it doesn't remain necessary to think, but something above or behind does the work. And a secret spring does what is needed with wisdom and foresight. So we have not to do anything. The moment we are in touch of that light and wisdom from above, then whatever is to be done, whatever is to be spoken, it gets done easily. So something above or behind does the work. And a secret spring does what is needed with wisdom and foresight. We see that mind is only an organizer of knowledge, which comes from elsewhere. Knowledge comes from elsewhere. And mind, whom all other yogas up till now has given so much importance to mind, that mind is only an organizer of knowledge according to the mother. In this yoga, the descending force opens very slowly, not like Kundalini arousing. Descending force opens very slowly. So with each center, all 7 centers are there. Some of the people say 12 centers. Some of them say 108 centers. At least let us see 7 centers. So that descending force opens very slowly. So with each center, corresponding to a universal force of consciousness, we pace the lower centers only after establishing our being solidly in the higher superconscious. So we slowly come from higher to lower to lower to lower. Vinobaji, when he read Life Divine, he said that when it is same thing like when I read Karl Marx, I read Sri Aurobindo as if I crossed the whole ocean. Vinobaji calls Sri Aurobindo's yoga Jasi Karanjachi Kala. It's a fountain. No, like a fountain. Water comes up, then goes down, goes up, comes down. Like that, this is the yoga of Sri Aurobindo according to it. Even Osho, he criticized Sri Aurobindo so many times. But one beautiful thing he said, that he is the only yogi who could talk of ascent and descent. So his yoga was ascent and descent. Vimladai Thakar, I was the inmate disciple of Vimlaji. She told me that every night you have to sing Sri Aurobindo to me, because nobody has talked about ascent and descent. He is the only yogi of ascent and descent. So Vimlaji was also very much fascinated by this particular yoga in this stance. So I think here I should stop and will continue in the next part. Am I okay? Taralbhai? Is almost over, so no problem. And Bhavanida, I will request you to start immediately and I will give the intro at the end of both Bhavani ji and Kritika ji. तो आप अपना दूसरे भाग उड़िया में शुरू करिए भवानी दादा. Just one clarification. I have to complete my talk within 9 minutes probably. Yeah, it's a summary of her talk. Yes. Okay. Thank you. President, brothers and sisters of Tribani Lodge, listeners, co-speakers, and Sri Taral Munshi ji, my hearty pranam to you all. I have to start in Odia regarding Ramakrishna Paramahansa in my first page. Satchidananda Rupaya Visvapatyadi Hetave
तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्ण वयं नमः। बंगालार हुगुली जिलास्थ कमार पोखर ग्राम रे एक साधारण परिवार रे 1836 मसीहा 18 तारीख फेब्रुआरी मसीह पिता खुदीराम चट्टोपाध्याय और माता चंद्रदेवी कुलमंडन कर जन्म नेले गदाधर जहाँ परवर्ती नाम है श्री रामकृष्ण परमहंस। केवल जड़े साधारण पूजक पूजा करने जी मंत्र जना थाए से ज्ञान रे विमंडित थे रामकृष्ण परमहंस। पिलादिनु असाधारण प्रतिभार आवास मिलता। से थे जड़े प्रकृति प्रेमी। एकदा मेघाच्छन्न आकाश उड़ंता धड़ा धड़ा भगवान देखी से भाव विह्वल हो मुठ सीधा जाते। जन्म कर्म संपर्क में शास्त्र कहती स्थापकाय धर्मस्य विश्व आनंद रूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय नमः। कलि जुगे सबुठारु निकटतम अवतार बोली श्री रामकृष्ण परमहंस को ग्रहण करा जायछि। कारण तांकर आविर्भाव विश्व को आनंद देवा निमित्त तांको पाखरे प्रभु श्रीरामचंद्रंकर एवं प्रभु श्रीकृष्णंकर जीवन धारा प्रतिफलित होइछि। अर्थात से एकाधारे जड़े निर्लिप्त सन्यासी एवं निर्लिप्त गृही थिले। शारदामणि को विवाह करी मध्य तांकर जीवन वृत्तांत को अनुसरण कले जना जाए जगत ठाकुर बोली तांको मान्यता प्रदान करछि। किंतु अंतभावनार स्तर आमर ज्ञानर परिसीमार बाहरे तांकर कार्यधारा एवं जगत जननी माता कालींकर उपासनार मार्ग अति विचित्र थिला एवं यह तांकर एक आश्चर्य लीला जार संदर्शन रे भक्तगण मनरे धरिले जे से जने पागल। किंतु किपरि पागल? से भक्ति रे पागल जहाँकर जीवन धारा पश्चिमा साधु नानक एवं कबीरंक ठारू संपूर्ण थिला भिन्न। काली माता को नैवेद्य अर्पण करी ने मा खा कही निजे खाई देउथले। कारण से थिले जने विरल ब्रह्मलीन जोगी जहाँ श्रीमद् भागवत गीतार पंचम अध्याय श्लोक कह जाइछि कर्म सन्न्यास युगरे ज्योंत सुखांतर राम स्वतंत्र ज्योतिरेवग्ध स योगी ब्रह्म निर्वाण ब्रह्म भूत अधिगच्छति। अर्थात जो व्यक्ति अंतरात्मा रे सुखी निजे निज हृदय रे आनंद रे थाए अंतकरण रे ब्रह्म दर्शन करे से योगी ब्रह्म स्वरूप होई शेष रे ब्रह्म रे मिशि जाए वो मुक्ति लाभ करे। रामकृष्ण परमहंस ठीक से परि एक योगी एवं विरल ईश्वर उपासक थे। महापुरुषगण आत्मप्रचार करती ना से निज निजर जीवनर आदर्श धारा रे जीवन यापन करी स्वधाम प्रत्यावर्तन करती एवं छाड़ी जाइथांती जीवन मूल्यबोधर आदर्श। तापरे तांकर अनुचरगण तांकर आत्मगाथा को विश्लेषण करी व्याख्या करी जगतवासी को दिग्दर्शन देइथांती। एकदा काली मातांकर उपासना रे दीर्घ दिन मजी जाई तांकर मूर्ति को से दर्शन करि न पारिबारु से निजर जीवन बलिदेवे भावी खंडा धरी जेतेबेले खंडा चोटरे निजर बेक काटिबाकु उद्यत हेले से तांकर ब्रह्मचक्षुरे दर्शन कले तेजमय आलोक मन शरीर खेलीगला अफुरंत दिव्य आनंद एवं ऐश्वर्य प्रज्ञा जद्वारा से संज्ञाहीन हो पड़े। यहीटा हूँ तांकर भाव समाधि जहाँ छड़ा काली मातांकर तांक प्रति कृपा। यह तांकर थिला एक महान भाव समाधिर प्रतिफलन एक विराट आत्मचेतना विश्व चेतनार प्रतिफलन जहाँ फल तांकर शरीर पृष्ठभाग एक रक्तर छिटा परिलक्षित होता जहाँ थिला जड़े शगड़ गाड़ी बाहकर तार गाड़ी बहुवा बलद पीठे बाड़ीर प्रहार कष्ट। जितेबाला ब्रह्म विद्यार संघर सभापति ईश्वर अस्तित्व संपर्क में प्रश्न कले श्रीरामकृष्ण उत्तर रखिले जे ईश्वर शब्दर उच्चारण ही स्थितिर प्रमाण। ए संपर्क में भक्तगण अक्षय कुमार सेन एवं कैलाश सेन प्रमुख टीपा खाता लिपिबद्ध करछंती। थरे नरेंद्र ओरफ स्वामी विवेकानंद जी थे पट्ट शिष्य ईश्वर संपर्क में पचारे तापरे ठाकुर तांकु भूमि रे शुआई दे छाती रे पाद रखिले। तापरे नरेंद्र निर्विकल्प समाधि अवस्था को आसीगले। यही समाधि संपर्क एवं निर्वाण संपर्क जेतेबेले नरेंद्र रामकृष्ण कहले मु निर्वाण चाहे श्रीरामकृष्ण कहले तुम्हें स्वार्थ कर सारा विश्वर जनता जेतेबेले मुक्ति पाई नाहंती तुम्हें सेमानकु मुक्तिर पथ न देखई बा सेमानकर दुख कष्ट को निवारण न करी निजे किपरि मुक्ति चाहूच यह तुम पक्षे स्पृहणीय नुहे। तापरे ठाकुर बाणी महत्व को हृदयंगम करी निर्देश नरेंद्र 1893 मसीह अमेरिकार चिकागो सहर में विश्व शैली योगदान करी सनातन धर्मर निर्यास उपर तार गर्भ भाषण प्रदान करी
सारा विश्व रे चर्चित एक व्यक्तित्व एवं अगाध आध्यात्मिक ज्ञानी व्यक्ति रूप में प्रतिभात हेले यह होची तांकर गुरुदेव रामकृष्णଙ୍କର तांको उपरे कृपा रामकृष्ण सर्वदा ब्रह्म लीन रहुतले एवं तार फलस्वरूप से प्रत्येक कथबार्ता समय तांकर रोष घर को जाती खाद्य अनुध्यान करने को सहधर्मिणी तांकर एही पिलाया स्वभाव देखि पचारिबारु कहिले तांकर शरीर धारण निमित्त से यही पंथा अवलंबन करछंती एवं आउ 3 दिन परे से तांकर पार्थिव शरीर त्याग करिवे एवं शेष रे सेया ही होइतला भक्त माननकु से गोटे कथा कहउतले तुम मानकर चैतन्य उदय हो हस हस मुखरे एवं आउ कहउतले एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ति अर्थात जेते पथ सेते मत यह होची दिस इज द फंडामेंटल एक्जिस्टेंस ऑफ वननेस बा एकत्व बोधर विश्वर जुग जुग धरी श्री रामकृष्णଙ୍କର बाणी त्रिताप जनित बा त्रिताप पीड़ित व्यथित मनुष्यर अंतर आनी देछि अपूर्व आश्वासना विश्वास और बंचिबार शक्ति जीवन को व्यक्ति विशेष नूतन रूप में दीछंती आत्मज्ञान तांकर आत्मज्ञान हेउछि मनुष्य को निज को चिन्हि पारले ईश्वर को चिन्हि पाइब मन हृदय मुकार भाव परिहार कर एवं मोर भाव मु एवं मोर भाव दूर हो गले ईश्वरंकर दर्शन मिलिब यह ही आत्मचेतना तांक भाषा रे जीवर जीवबोध विषय बासना रे मज्जिगले सेतुरु बाहरिबा कष्टसाध्य अटे जीवर एही बासना तार आध्यात्मिक प्रगतिर बाधक अटे जदि गोटे गोबर पोकू गोबर गदा मध्यरु काढ़ी आनी बाहर रखिदेबे से छटपट होई मरिजिब ठीक सेही परी विषय बासनार घर भितरु बाहर को आसी जाओ तद्वारा विषय बासनार अंत घटी ईश्वरीय बासना मनरे भरिजिब मनरु सबु उपाधि उभैजिब श्रीमद् भागवत कहले जीव अज्ञान भाव देख दुख को मणे महासुख उपाधि बासना अशेष ज्ञान अनय हुए ध्वंस ईश्वर उपासना संपर्क रे जनेक भक्त पचारे संसार भितर रही कौन जड़े ईश्वर उपासना करिपाइब श्रीरामकृष्ण उत्तर देले ग्राम रे स्त्री लोक माने ढिंकी चूड़ा कुटिया समय तले बसी स्त्री लोकटी ढिंकी सार काठ गड़ा गात मध्यरु हाथ पुड़ाई चूड़ा बाहर करे गोटे हाथ रे और अन्य हाथ रे कोଳରେ शिशु धरी स्तन्यपान कराउथाए किंतु तार मनटी सब थाए ढिंकेर मुसळ उपरे कारण ढिंकर मुसळ हाथ रे बाजिले हाथटी जखम हो ठीक सेही परी संसार रही सब काम करी मन को ईश्वर ठारे रखि था ईश्वर को छाड़िले सब अनर्थ सृष्टि हम संसार भितर रही ईश्वर आराधना साधना जी करती सी ही ठीक साधक संप्रदाय कौन संप्रदाय को से मना करना जतो मत ततो पथ पुणी कहते गृहस्थ जीवन हो कि तपस्या द्वारा हो कि प्रेम भक्ति द्वारा हो कि योग साधना द्वारा हो भगवान को लाभ करहब जे कौन मार्ग करे कारण एकम सत विप्रा बहुधा वदंती सत्य गोटे ताकू विप्रगण अनेक बड़ी कहती फरासी साहित्यिक नोबेल पुरस्कार विजेता रोमा रोल्ला तांक संपर्क मत प्रदान कर रखिले पाश्चात्यवासी गण तुम मानकर कंठ रोध होती मु तुमर गला को भिजाइबा निमित्त तुम्भ मानकर तृप्ति निमंते गोटे अमृत भांड आनी ताहा होची श्रीरामकृष्णଙ୍କର जीवन चरितात्मक अमृत भांड तांकर धर्म होची आत्मा विश्वात्मा एवं परमात्मा मध्य संपर्क पथु बा सेतु जहाँ व्यक्ति को परमात्मा निकट में पहुंचाई थाए थे बनारस गंगा गोरे मणिकर्णिका घाट में मध्यरात्र ध्यानस्थ आसवा समय से देखिले अंतचक्षुरे जे शिव अर्थात प्रभु विश्वनाथ मणिकर्णिका घाट में दाह होगा सब मान कान में राम तारक मंत्र कहते तेणु मणिकर्णिका घाट में जो मैंने सत्कार होती से पुनर्जन्म हुए ना शिव कृपारू शेष समय 1886 मसीहा अगस्ट मास 16 तारिख शेष समय उपस्थित है विवेकानंद ईश्वर संपर्क में पचारे सी विवेकानंद उत्तर दे जी राम सी ही कृष्ण आज से ही राम एवं कृष्ण रामकृष्ण रूप से तो सम्मुख में अवतीर्ण होती सर्वधर्म सम्मान एवं सुरक्षा थिला तांकर निर्देश बास एति कही विधान होची अशेष धन्यवाद दूसरी ब्रदर तरल मुंशी जी को से मते रामकृष्ण परमहंस संपर्क रे कही कहवा अनुमति प्रदान करते थैंक यू माय लिसनर्स फॉर योर पेशेंट लिसनिंग थैंक यू दादा you finished in right time and Kritika ji I am passing the title to you for continue and I will introduce you in the second half. Thank you.
थैंक यू सो मच सरल सर। रामकृष्ण जी, रामकृष्ण जिन्हें हम श्रद्धा से ठाकुर कहते हैं, उन्हें थोड़ा रामकृष्ण के सुषमाचार के माध्यम से जाना जा सकता है, क्योंकि उनका आंतरिक अस्तित्व हमारी पहुंच से बाहर है। हम विभिन्न माध्यमों से झलकों को जानकर खुद को सांत्वना देते हैं। देवी महाकाली के साथ उनकी अद्भुत एकता हमें आश्चर्यचकित करती है और उन्हें पश्चिम में प्रतिभावान घोषित किया जा सकता है, क्योंकि वे कबीर, नानक देव इत्यादि की तरह पश्चिम के आईक्यू की बराबरी नहीं करते थे और ना ही कर सकते थे। एक बार उन्होंने धैर्य खो दिया, क्योंकि कई दिनों तक पूजा करने के बाद भी उन्हें देवी का साक्षात्कार नहीं हुआ। उन्होंने तलवार ली और अपना गला काटने की कोशिश की, और तीसरे ही सेकंड में जब वह खुद पर हमला करने वाले थे, प्रकाश, आनंद और ज्ञान से भरे महान रूप के उन्हें दर्शन हुए और उन्होंने अपनी चेतना खो दी और वे उस रूप में डूब गए। वो इतने पहुंचे हुए थे कि वो चेतना के इतने ऊंचे स्तर पर थे कि इसके कुछ उदाहरण है कि उनकी पीठ पर से खून बहता था जब अगर कोई गाड़ी वाला बैल को चोट पहुंचाता था। और सभी धर्मों के अभ्यास के दौरान वे महिला भक्त के रूप में अभ्यास करते समय माहवारी महसूस करते थे। धीरे धीरे जब हम किसी भी उस स्थिति में पहुंचेंगे, तब हमें भी दूसरे की अनुभूति का स्वयं एहसास होगा। जब हम भी उस स्तर पर पहुंच जाएंगे तो हमें भी एहसास होगा जो वह महसूस करता है। जब थियोसॉफिकल सोसाइटी के प्रेसिडेंट ने उन्हें ईश्वर के अस्तित्व के बारे में चुनौती दी, तो उन्होंने प्रत्येक तर्क के बाद उन्हें यह कहते हुए गले लगाया कि उनकी बुद्धि उनके अस्तित्व का प्रमाण है, और उन्हें भेजने के लिए भगवान को हर बार धन्यवाद दिया। जब नरेंद्र, जिन्हें हम श्री विवेकानंद जी के नाम से जानते हैं, उन्होंने उनसे भगवान के बारे में पूछा, तो उन्होंने उन्हें जमीन पर फेंक दिया और अपना पैर उनकी छाती पर रख दिया। नरेंद्र निर्विकल्प समाधि में डूबे हुए थे। वह नरेंद्र से मिलने के लिए उत्सुक थे, क्योंकि वह सप्तऋषियों में से एक थे और एक मिशन के साथ आए थे। ठाकुर ने अपने शिष्यों को बताया कि अगर वह फिर से समाधि की मांग करते हैं तो वह अपना शरीर छोड़ देंगे। इसलिए उन्होंने इस अनुभव को बंद कर दिया था, और ऐसा ही हुआ। कई बार हमको सब कुछ तुरंत जानना है, भगवान कहाँ है तुरंत दर्शन दीजिए, अगर कोई इनविजिबल हेल्पर्स है तो तुरंत दिखिए, लेकिन हर चीज तुरंत नहीं हो सकती। इसीलिए उन्होंने नरेंद्र को इस सवाल पे तुरंत पटक दिया। 1893 में उनका मिशन पूरा हुआ, जब उन्होंने वॉशिंगटन, अमेरिका में सभा को संबोधित किया। ठाकुर ब्रह्मांड में इस कदर डूबे हुए थे कि हर बार बात करते करते वह भोजन के बारे में जानने के लिए रसोई में चले जाते। एक बार क्योंकि उनकी धर्मपत्नी श्रीमती शारदा मणि देवी जी ने ये सब कुछ रोज देखती थी, तो उन्होंने पूछा कि ऐसा करना कितना बचकाना है। तो उन्होंने उत्तर दिया कि अपने शरीर को जारी रखने के लिए उन्होंने इस तकनीक को अपनाया है, और अगर वे रुके तो उसके ठीक 3 दिन बाद वह अपना शरीर छोड़ देंगे। और ऐसा ही हुआ। एक बार 4 दोस्तों ने सैर के दौरान एक दीवार से घिरी एक जगह देखी। दीवार बहुत ऊंची थी। ये सब जानने को उत्सुक हो गए कि अंदर आखिर में है क्या। उनमें से एक दीवार की चोटी पर चढ़ भी गया। अंदर देखने पर उसने जो देखा, उसने उसे आश्चर्य से अवकार किया। वह केवल रोने लगा, ओ चिल्लाने लगा और अंदर गिर गया। उसने जो देखा उसके बारे में वह कोई जानकारी नहीं दे पाया। बाकी लोग भी दीवार पर चढ़ गए और वही चिल्लाए और अंदर कूद गए। अब कौन बता सकता है कि अंदर क्या था? ब्रह्मांड क्या है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। जो इसे जानता है वह कभी इसके बारे में बात नहीं कर सकता। तो चलिए अब जानते हैं श्री औरोबिंदो जी के बारे में।
कल श्री औरोबिंदो जी की 150वीं जयंती थी और रंजन बेन ने उसकी उपलक्ष्य में एक पुस्तक द वे टू सुपर माइंड प्रकाशित की। उन्हें यहाँ योग की दुनिया में उनके योगदान को प्रस्तुत करते हुए काफी खुशी हुई। उन्होंने इसके बारे में भी वर्णन किया। जब हम औरोबिंदो जी के बारे में बात करते हैं तो उनके बाहरी जीवन के 3 चरण हैं। इंग्लैंड में छात्र के रूप में शानदार करियर, राजनीतिक करियर और योगी श्रेष्ठ। उनके बंगाली शिक्षक ने लिखा, उनकी मुस्कान एक बच्चे की तरह सीधी सादी और प्यारी थी। कौन सोच सकता था कि यह कांसे का युवक अहमदाबाद की आम धोती पहने अपने पुराने जमाने की चप्पलों पर कोई और नहीं बल्कि मिस्टर औरोबिंदो घोष थे। फ्रेंच, लैटिन और ग्रीक के एक जीवित कुआं। पर्याप्त बौद्धिक जिम्नास्टिक के बाद बुद्धि की प्रतिष्ठा चली गई। मंदिरों से उन्हें कोई रुचि नहीं मिली। उन्होंने शुरू में योग से भी इनकार कर दिया था। जब कोई ध्यान करने के लिए बैठता है, हम में से कोई भी, तो हम भयभीत आक्रामक चूहों की तरह विचारों की धारा महसूस करने लग जाते हैं, कहीं कहीं चले जाते हैं बैठे बैठे। इसे सहन करें। धीरे धीरे दबाव वास्तविक धारा में बदल जाता है। जो भी तत्व या ज्ञान या चेतना हमें उच्चतम स्तर से मिलती है, उसको ग्रहण करने के लिए हमें धैर्य और स्थिरता के साथ ग्रहण करना होगा, ताकि वो चेतना धीरे धीरे हमारे पास आए और समा जाए। ज्यादातर लोगों को इस तरह की चेतना तुरंत और संपूर्ण चाहिए होती है, पर हमें इन स्थितियों में धैर्य रखना बहुत आवश्यक है। श्री औरोबिंदो के योग का मूल अनुभव यही है। धीरे धीरे सोचना जरूरी नहीं रहा जाता, लेकिन ऊपर या पीछे कुछ काम करता है और एक गुप्त वंशज ज्ञान और दूरदर्शिता के साथ आवश्यक होता है। हम देखते हैं कि मन केवल ज्ञान का आयोजक नहीं है जो कहीं और से आता है। इस योग में अवरोही शक्ति बहुत धीमी गति से खुलती है। इसीलिए चेतना की एक सार्वभौमिक शक्ति के अनुरूप प्रत्येक केंद्र के साथ हम उच्च अतिचेतन प्रकाश में अपनी सत्ता का ठोस रूप से स्थापित करने के बाद ही निचले केंद्रों का सामना करते हैं। इसी के साथ मैं पहले भाग को यही समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। तो मच कृतिका, बहुत बहुत धन्यवाद। और रंजन जी, मैं आपको इनवाइट करता हूँ कि आप भाग 2 आज हमारा जो है उसे प्रसारित करें। धन्यवाद। Thank you, Taralji. Now, consciousness is a force, and yogic discipline or tapasya produces heat or energy, we all know. Like electric current, this force can also animate or illumine anything. Einstein has taught that matter is condensed energy and evolution is a slow process. It's a slow conversion of force into consciousness from atom to spirit. In his formula, E equal to mc square, he describes this. There can be a conversion of force. At certain stage, consciousness can act on matter and vice versa, which is the aim of supramental yoga. Which says hierarchy from higher mind, illumined mind, intuitive mind, and overmind. Overmind is the land of gods. Overmind is a place from where all the religions have come to us. What is the use of development? If a rustic mysticism can do better, he writes. If we admit that in evolutionary line, the highest summits of earth consciousness, the altitudes, that of a Leonardo da Vinci
of a Beethoven, an Alexander, or a Dante. He himself was a Leonardo da Vinci in his previous birth. But still he writes, they could not transform life. The power to change the world, another principle of consciousness is needed. Every one of us receives constantly without noticing it. We all receive it. What do we receive? Influences from higher superconscious planes, which translate in us into ideas, ideals, aspirations, works of art, etc. And it is the only essential thing to open to these higher forces. He writes that in Savitri that we all are postmen. Whatever is given to us, we transmit to the audience or to the readers. The simultaneity of both cosmic and transcendental position of supramental position is the key of the true life. So he has both cosmic and transcendental acceptance in his yoga. All the religions, all the spiritualists have sprung up from this fundamental need. What was the need? To find a basis of permanence. Because we all know that everything is impermanent. So to find refuge and peace outside chaos, impermanence, and suffering of the world. We have spoken of nirvana. The great deliverance is touched. The experience of Aurobindo also began with nirvana in Baroda, on a swing in 3 days, which we have kept here because he stayed here for 13 years. But it finishes. For him, it finishes with the plenitude of the world, which is a central contradiction of other yogas and Sri Aurobindo's yoga. Supramental power is infinitely more intense hit in the cells of the body, which is the basis of supramental transmutation in our cells itself. In fact, the heat released by combustions and other chemical reactions, like we saw in the God's boson, his boson, that particle, God particle. Heat released by combustions and other chemical reactions is only the physical translation of what the Vedic rishis called Agni, the spiritual fire in matter. It is matter itself, awakened to the consciousness of its force, which operates directly its own transmutation. For example, this body is made of matter, annam brahmeti vyajanat, annati eva imani bhutani jayanti. So that matter itself will operate. Immobility is the foundation for this. What is required? Immobility is the foundation and silence is the condition. So when the Guru Ravindra Tagore went to meet him, he was thinking that I will be approaching my friend and I will hug him, will take him in my ashlesh. But the moment he saw him, he could not hug him. He was so much fascinated and embezzled by his personality that he had to say, "Oh, Aurobindo, the whole nation will speak through you. You will speak for the nation." And a beautiful quote is there by Rabindranath Tagore. So much silence he had, without which this yoga is not possible. I give you the example. Once in Pondicherry, there was a very heavy storm. And Aurobindo's papers were just lying here and there on the table. It was his manner. Normally, all writers are like that only. So mother was worried that the windows are open and there is so much heavy storm and wind is there and all the papers might have flown away. When she went into his room, to her surprise, not a single paper
moved from here and there, and there was no sign of storm in his room. This is how he practiced silence. It was through the strength of this immobility was the strength, that he worked for 40 years in one room. Adi Shankaracharya, he talked of non-action and traveled 4 times all over India. And this man has proclaimed action, and he was without action for 40 years in one room. Years in one room, and could write 12 hours every night, walk 8 hours every day to bring down this light into matter. Battle in the inconscient world without fatigue. So this is how he worked. In this yoga, we want to bring down the supermind as a new faculty. Just as mind is now a permanent state of consciousness, so we want to create a race in which the supermind will be a permanent state of consciousness. In order that his purpose might not be mistaken, Sri Aurobindo stressed this often, that he has no intention to propagate any religion, new or old, for humanity in future. Because he said that only medicines and books, they require propaganda. No other thing, no spiritual matters, they require propaganda. He said, explained to us that nature has followed 4 main lines to open the inner being: religion, occultism, spiritual thought, and inner spiritual realization and experience. Religion has admitted an occult element in its ritual, ceremony, sacraments. It is derived from spiritual thinking, a creed, or theology, or spiritual philosophy. But spiritually, experience is the final aim and achievement. But sometimes pushing away occultism, philosophical mind, and spiritual experience, religion leaned on creed and dogma and moral conduct. So far as occultism is concerned, he writes, occultism putting forward a spiritual aim and following occult knowledge and experience has formulated some kind of mystic philosophy, but without any spiritual vistas. So mother, actually, when she was in Egypt with Theon, she also learned to practice occultism. Even with his wife, there were many experiments done of occultism. But later on, she denied that if you really want to be totally spiritual, you try to avoid occultism. Then spiritual philosophy, third one. Leaning on religion and outcome of realization and experience, has rejected impediment of religion, or satisfied with mental knowledge, has discovered its own path of experience. And spiritual experience, lastly, has used all the 3 means, but then dispensed with them all, relying on its pure strength and pure truth of the spirit. All these variations were necessary. Each one corresponds to something in our total being. So something necessary to the total aim of nature's evolution. So it is the sole intention of nature in the evolution to awaken spiritual man to the supreme reality and realize and release him from herself. Then in the essence, her work has already been accomplished. All that is left is for each soul to reach individually the right stage. But we have supposed that there is a further intention, a radical and integral transformation of nature,
there is a will in her to complete what she has begun and to reveal herself as the luminous consciousness force. So it then becomes obvious that there is much that is still to be done. Bhuri aspashta kartvam, and there is a height to be reached and a wideness to be covered. So before our thinking, reasoning, reflecting mind, there was unconscious, and before that there was subconscious. After us, there is likely to be a greater consciousness, not depending on constructive thought. That kind of consciousness which will not require any constructive thought before explaining anything, before speaking anything, or before writing anything. This is why I think this was an original research. Supramental really descended in 1938 as a descent in Aurobindo, and 1956 as a manifestation on the earth. And we all who seriously believe, and even those who don't believe and don't know, this supramental, that is Ati Manas. Ati Manas is Bhur, Bhuva, Maha, Swaha, Tapaha, Satyam. So that Mahas, that intellectual horizon has already been descended, and we all know what kind of beautiful, wonderful results we have been experiencing. There is no other thing, but just I would like to have a naman for my Lord, Sri Aurobindo. So, this Savitri is a wonderful book, is a magnum opus. Same is the life divine. And whenever we read Savitri or I read Savitri, let me confess that I experience that force from above, which makes me silent, which makes me mobile. And it is with this power that Savitri could win over Yama and could bring her husband Satyavan to earth. So taking 700 lines from Mahabharata on Satyavan and Savitri, he has written 24,000 lines describing and actually manifesting his own yoga in his own way, because whatever he found in his samadhi, he has expressed it in his experiences in Savitri. So I'm really grateful to Taralbhai, grateful to both the translators Mohanty ji and Kritika for wonderfully explaining that. So thank you very much. थैंक यू रंजन बहन। वाकई में आप जो भी विषय पे बोलती हैं वो बहुत शोध और बहुत एक्सपीरियंस के साथ बोलती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और भवानी जी, मैं आपको आमंत्रित करता हूं और चाहूंगा कि मैं अब आपका परिचय दूं। समय बचाने के लिए मैंने सोचा था कि मैं बाद में परिचय दूंगा। भवानी शंकर मोहंती जी बारामती थियोसॉफिकल लॉज से संबंधित हैं। वे एमएससी हैं मैथमेटिक्स में, एलएलबी उत्कल यूनिवर्सिटी से हैं। जूट टेक्नोलॉजिस्ट रहे हैं वे काफ़ी सालों तक, और उन्होंने बहुत टीओएस की सेवा की है। 20 साल वे सेक्रेटरी रहे कटक के, और फेडरेशन लेक्चरर भी रहे उत्कल थियोसॉफिकल फेडरेशन के बहुत लंबे अरसों तक, और इस वक्त वे सेक्रेटरी भी हैं। उन्होंने बहुत सारे लेक्चर्स दिए उड़ीसा के अलग अलग लॉजेस में और स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस में। वे श्री परमहंसा जी के बारे में 120 आर्टिकल्स के करीब इन्होंने पब्लिश किए हुए उड़िया न्यूज़पेपर में, और 2 किताबें भी इन्होंने पब्लिश की हुई हैं। काफ़ी आदरणीय और एक्सपीरियंस्ड हमारे भवानीदा जब से त्रिवेणी से जुड़े हैं, उन्होंने एक उड़िया का नया स्वाद हमें दिया है। तो आइए और अपना द्वितीय भाग संपूर्ण कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अनम्यूट कर लीजिए। नहीं, अनम्यूट नहीं हुआ। अनम्यूट कर लीजिए। दादा अनम्यूट नहीं हुआ अभी। हाँ जी, Is it okay?
जी Is जी it okay? यस सर यस सर Thank you, Sister Ranjana ji and Sister Kitika ji and Taral ji. Of course, I am not to that extent what Brother Taral ji explained about me. Thank you. Sri Aurobindo 1872 मसीहा अगस्त 15 तारिख दिन जन्मलाभ करथिले। श्री अरविंद घोषंकर जीवन यात्रा तीनोटी भाग में विभक्त करा जायछि, यथा एक प्रतिभापूर्ण छात्र जीवन इंग्लैंड रे, राजनैतिक जीवन एवं जड़े सफल योगी। इंग्लैंड रे से आईसीएस को प्रत्याख्यान करथिले। तांकर साहस बदन एक कुनी शिशुर हस सदृश जो भर रही निर्मल निष्कपट हृदयर भाव। जीवनर रंगमंच रे एक मामूली धोती परिहित एवं पादरे सामान्य चपल व्यतीत तांकर अन्य प्रसाधन नथिला। से बारी पड़ुले फरासी, लाटिन एवं ग्रीक भाषी गण रे। जीवनर शास्त्र पठन रे अगाध पांडित्य लाभ करी प्राथमिक अवस्था मठ मंदिर दर्शन एवं योग साधना रे विमुख थिले, किंतु थरे ध्यानस्थ होगा परे अनुभव कले शरीर मध्य चेतनार व्यापकता, शक्तिर अमाप शक्तिर व्याप्ति, शक्तिर प्रसारण विभिन्न दिग को एथि सहित अनुभव कले एक ऐश्वर्य प्रज्ञा या किपरि बा यही चेतना को यही चेतनार स्तर को किपरि व्याप्त चेतनार व्यापक चेतना को रूपांतरित करहब तार निर्देशला श्री अरविंद योग। यही गुप्त चेतनारू तांको हृदय जन्म लाला ईश्वरीय प्रज्ञा एवं अतिमानस चेतना बा फोरसाइट, जार परिवर्धित रूप होउची सुप्रामेंटल कॉन्शसनेस बा अतिमानस बा मानस रु अतिमानसीय दूर दिगंत। यही योग द्वारा सुप्त होइतबा शक्ति एवं सुप्त चेतनार स्तर धीरे धीरे तार केंद्र स्थल गतिकला तपस्या आड़क, जद्वारा नूतन उत्ताप और शक्तिर उद्रेक है, जहाँ वैज्ञानिक आइनस्टाइन सूत्र अनुसार E=mc² परिवर्धित रूप से हृदय बोध है जे कस्मिक स्तर मानसिक स्थिति एवं अतिमानस स्तर मानसिक स्थिति होउची जीवर सत्यर उपलब्धिर चाबिकाठी। या द्वारा जीवनर आध्यात्मिक चेता माने सेमानकर पार्थिव आवश्यकता ठारू ऊर्ध्व को उठी जाई पारिबे केवल यही अतिमानस चेतना को आधार करी एवं तद्वारा सेमाने पाई पारिबे सामाजिक त्रिताप जनित द्वंद्व एवं त्रिताप जनित पार्थिव कष्टर मुक्ति। यही सुप्रामेंटल पावर बा अतिमानस शक्तिर उत्ताप शरीर कोष मान को अति जागतिक अवस्था को नहीं जाए। बाह्य उत्ताप जो पदार्थ दायिका पदार्थर दहन मिले बा रासायनिक प्रक्रिया प्राप्त हुए, यह केवल भौतिक कांड द्वारा बा अग्निर प्रज्वलन जहाँ को वेदरे अग्नि बोली कह जाइछि। जहाँ बाह्य पदार्थर दहन संभव होता है ताकू वैदिक ऋषिगण अग्नि बोली कहती, किंतु अतिमानसिक चेतनार शक्ति जे असीम जो अपरिसीम बल सहित कॉन्शसनेस बा व्यक्ति चेतना सीधा सड़क सीमाहीन शक्ति सहित सीमाहीन चेतन परिणत होता है। यह केवल नीरवतार मिले, जो वॉइस ऑफ साइलेंस कहले माइंड इज द ग्रेटेस्ट स्लेयर ऑफ द रियल, लेट द डिसाइपल स्ले द स्लेयर। एवं महापुरुष अच्युतानंद ओडिशार महान संत से कहते मनरे पश पश निशब्द पुरी चंद्र सूर्य दुई नित्य पहारी। यही अतिमानसिक चेतना को विश्वव्यापक करने श्री अरविंद एक निरवच्छिन्न भाव में 40 वर्ष धरी एक कोठरी भितर अवस्थान करी दिन राति एक कर देते। दैनिक 12 घंटा परिश्रम करी सारा विश्व को यह आलोक प्रदान करने निमित्त तांकर यही जोगर परिणाम स्वरूप आम एक नूतन उपाय संधान में ब्रती हेलु एवं मनरू अतिमानसिक अवस्था को यात्रा करिवार पथ देखिलु। श्री अरविंद तांकर सुप्रामेंटल बा अतिमान स्तर सारवत्ता बुझाई बुझाई कौन सी नूतन धर्मर अवतारणा करना मनुष्यर एक नूतन दिगंत को यात्रा पथ प्रदर्शन कर। थियोसॉफी रे यह हेउची लोअर माइंड रो हायर माइंड को यात्रा, दैट इज फ्रॉम कॉन्क्रीट थॉट टू एब्स्ट्रैक्ट थॉट एवं बोधिर मार्ग को बा इंट्यूशन को यात्रा। मनस्तत्वविद सिगमंड फ्रॉइड तांकर मनस्तात्विक विश्लेषण रे तीनोटी मनर अवस्थापन अवस्था संपर्क में धारणा देइछथि। गोटे होची अचेतन मन अनकॉन्शियस, आउ गोटे होची अवचेतन मन बा सबकॉन्शियस, आउ गोटे होची चेतन मन बा कॉन्शियसनेस। किंतु श्री अरविंद अचेतन मन शब्द को अवास्तव बोली विचार करछथि। अरविंद कहिथिले अखंड भारत गठन पई से चेष्टा करछथि। भारतर ए संपर्क भारत जे थिले चीफ इलेक्शन कमिशनर सी चेष्टा आगु चेष्टा करछथि। अरविंद
एकाधारे जने प्रशासक साहित्यिक महायोगी अतिमानुष योगर प्रवर्तक महात्मा गांधी कहले where is India without Pakistan and where is Pakistan without India division must go भारत पाकिस्तान केवे चिरदिन अलग होई रही पारिबेनी बोली अरविंद कहते आलीपुर जेल घटना मिथ्या आरोप अरविंद आलीपुर कारागार रे बम ब्लास्ट कारण रे बंदी हेले एही समय से सेठार कैदी मानक पाखरे प्रभु श्रीकृष्ण को दर्शन करछंती सारांश श्री अरविंद तांकर अंतर्दृष्टि और दूरदृष्टि बल मनुष्य मनर भविष्यतर विवर्तनीय विकसित सोपानर परिकल्पना करछंती एवं संदर्शन मध्य करछंती जहाँ थियोसॉफी रे होची सिक्स्थ रूट रेस अरविंदर एक श्रेष्ठ कृति होची ग्रंथ सावित्री चरित्र को एक सिंबल बा आदर्श उदाहरण छाप बोली विवेचना करी से मृत्यु लोक अमरोत्तर मार्ग प्रदर्शन करछंती ए संपर्क रे गोटे लाइन मु इंग्रजी पढुची if I may be permitted it is in Savitri flame that Yama is finally defeated and consumed and transformed into light although the fight takes place exclusively between Savitri and death the whole universe and humanity are indirectly involved in it the war between them is fought not solely for Savitri herself but for the entire humanity. It is also necessary to remember that although Asopati is superficially and interested yoga and Savitri is an interiorized yoga, the spiritual realities affirmed or experienced by them are the same. Asopati is the forerunner and Savitri is the avatar, and they are both necessary for the manifestation and the dual act of redemption and new creation. अरविंद शेष समय उपस्थित है 1950 मसीहा डिसेम्बर 5 तारिख से देह रक्षा कले एपरी एक जोगी विरल जोगी सारा भारत में समस्त पाखे विरल और समस्त पाखे नमस्य श्रोता बंधु मान हार्दिक शुभेच्छा एवं धन्यवाद जनाऊँगी श्री तरल मुंशी महोदय को अंतर धन्यवाद जनाऊँगी कारण से मते अरविंद संपर्क में किसी कहवा सुजोग देथिबारु आउ गोटे कथा टिके रिपीट करुँची जो मिथ्या अभियोग आलीपुर जेल श्री बंधु थे से कैदी मान पाखे प्रभु श्रीकृष्ण को से दर्शन कर थैंक यू श्री तरल जी थैंक यू ऑल द लिसनर्स हैव ए नाइस डे थैंक यू वेरी मच आई एंड हियर थैंक यू सो मच बहुत बहुत अच्छा रहा भवानी दादा आप हमेशा ही विषय के साथ न्याय करते हैं और कृतिका जी आपका स्वागत है और मैं अब आपका परिचय देना चाहूँगा क्योंकि समय अब बिल्कुल सही हो गया है और हम पूरी तरह से जो अंत में वार्तालाप करते हैं उसके लिए भी बचेगा। तो कृतिका एक इंजीनियरिंग की स्टूडेंट हैं और वे बीटेक मैकेट्रॉनिक्स में उन्होंने बनस्थली विद्यापीठ राजस्थान से किया है। वो गाजियाबाद की मूल निवासी है और प्रयास थियोसॉफिकल लॉज की एक युवा और बहुत सक्रिय सदस्य है। ट्रेंड क्लासिकल नृत्यांगना है और दुनिया भर में यात्रा करना और कई नई चीजों की खोज करना पसंद करती हैं। त्रिवेणी के चैलेंजेस में स्वीकार करती हैं। जब भी इन्हें बोलने के लिए बुलाया जाता है ये हमेशा हाँ में ही जवाब देती हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। एक त्वरित शिक्षार्थी हैं और इतनी उत्साही हैं कि सार्वजनिक बोलने और वाद विवाद में भाग लेना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। वे हमेशा दूसरों की मदद करने को तैयार रहती हैं। भवाली आदि कैंपों में उन्होंने बहुत सारे कैंप अटेंड किए हैं और सबसे बड़ी बात है कि वो जो हमारा युवा भारतीय थियोसॉफिस्ट का समूह है उसकी एक नियमित सक्रिय सदस्य, नियमित सूत्रधार और मध्यस्थ हैं और काफी जिम्मेदारी निभाती हैं उस पूरे यूथ समूह को चलाने में। तो आइए कृतिका जी आपका स्वागत। थैंक यू सर। तो चलिए दूसरे भाग की तरफ चलते हैं। हम बात कर रहे थे श्री औरोबिंदो जी के बारे में। चेतना यौगिक अनुशासन में एक बल और तपस्या है जो ऊर्जा पैदा करती है। विद्युत प्रवाह की तरह यह बल भी कुछ भी चेतना या प्रकाशित कर सकता है। अगर हम आइंस्टाइन जैसे वैज्ञानिकों की बात को समझें तो मूलतः हमें यह पता चलता है कि हर पदार्थ में ऊर्जा है और उसी ऊर्जा से
विकास प्रक्रिया में रूपांतरण चलता रहता है, भले ही वह सूक्ष्म रूप से हो रहा हो और धीमे हो रहा हो, लेकिन वह चलता रहता है, चलता रहता है। एक निश्चित अवस्था में चेतना पदार्थ पर कार्य कर सकती है, जो अति मानसिक योग का उद्देश्य है, जिसमें उच्च, प्रबुद्ध, सहज और अति मानस से प्रदानुक्रम में उसके विपरीत भी होता रहता है। विकासवादी रेखा में पृथ्वी चेतना के उच्चतम शिखर, ऊंचाई, लियोनार्डो दा विंची, बेथोवन, सिकंदर, दांते आदि की ऊंचाई जीवन को बदल नहीं सके। दुनिया को बदलने के लिए शक्ति चेतना के एक और सिद्धांत की जरूरत है। हम में से हर कोई उच्च अतिचेतन विमानों से प्रभाव, जो हम में विचारों, आदर्शों, आकांक्षाओं, कला के कार्यों में अनुभव करते हैं, इसे नोटिस किए बिना लगातार प्राप्त करते रहते हैं। और इन उच्च शक्तियों को खोलना एकमात्र आवश्यक चीज है। अति मानसिक स्थिति की लौकिक और पारलौकिक स्थिति दोनों का एक साथ होना सच्चे जीवन की कुंजी है। सभी धर्म, सभी आध्यात्मिकताएं स्थायी व्यक्ति का आधार खोजने के लिए अराजकता के बाहर शरण और शांति खोजने के लिए अनित्यता और दुनिया की पीड़ा इत्यादि मूलभूत आवश्यकताओं से उठी है। श्री औरोबिंदो जी का अनुभव निर्वाण के साथ शुरू हुआ, लेकिन यह दुनिया की बहुतायत के साथ, जो एक केंद्र विरोधाभास है, वहां समाप्त हो गया। अति मानसिक शक्ति शरीर की कोशिकाओं में असीम रूप से अधिक तीव्र गर्मी है, जो अति मानसिक रूपांतरण का आधार है। वास्तव में दहन और अन्य रासायनिक प्रतिक्रियाओं द्वारा उत्पादित गर्मी केवल वह है जिसे वैदिक ऋषियों द्वारा आध्यात्मिक अग्नि कहा जाता है। यह पदार्थ ही अपने बल की चेतना के लिए जागृत है, जो सीधे अपने स्वयं के रूपांतरण को संचालित करता रहता है। गतिहीनता नींव है और मौन स्थिति है। इस गतिहीनता के बल पर ही उन्होंने एक ही कमरे में 40 साल तक काम किया। सोचिए, हर रात 12 घंटे वह लिख सकते थे, हर दिन 8 घंटे चलकर निश्चेतन दुनिया में बिना थकान के जूझ रहे पदार्थ पर प्रकाश डाल सकते थे। और हम लोग तो हर दिन को ऐसे सोचते हैं कि कितना भारी है। इस योग में हम अतिमानस को एक नई क्षमता के रूप में नीचे लाना चाहते हैं। जैसे मन अब चेतना की एक स्थायी अवस्था है, वैसे ही हम एक ऐसी दौड़ बनाना चाहते हैं जिसमें अतिमानस चेतना की एक स्थायी स्थिति हो, ताकि उद्देश्य गलत ना हो। श्री औरोबिंदो जी ने अक्सर इस पर जोर दिया कि भविष्य में मानवता के लिए नए या पुराने किसी भी धर्म का प्रचार करना उनका कोई इरादा है ही नहीं। किसी धर्म को विकसित करना या पुराने धर्मों को मिलाना या कोई नया धर्म स्थापित करना उनका उद्देश्य कभी था ही नहीं, क्योंकि इनमें से कोई भी चीज उसके केंद्रीय उद्देश्य से दूर हो जाएगी। उनके योग का एक उद्देश्य एक आंतरिक आत्म विकास है, जिसके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति जो इसका अनुसरण करता है, वह समय के साथ सभी में एक आत्मा की खोज कर सकता है और मानसिक, आध्यात्मिक और अति मानसिक चेतना की तुलना में एक उच्च चेतना विकसित कर सकता है, जो मानव प्रकृति को रूपांतरित और दिव्य बना देगी। श्री औरोबिंदो जी कहते हैं कि गूढ़ता प्रकृति की छिपी शक्तियों का ज्ञान और सही उपयोग है। गूढ़ शक्तियां वे शक्तियां हैं जिन्हें केवल स्पष्ट घटनाओं के पर्दे के पीछे जाकर ही जाना जा सकता है। विशेष रूप से सूक्ष्म भौतिक और अति भौतिक
विमानों की ये ताकतें हैं। इसी के साथ मैं भाग 2 यही समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद कृतिका। और मैं अब ये चाहूंगा कि मैं मंच खुला करता हूँ सभी लोगों के लिए। सबसे पहले मैं रंजन जी को कहूंगा कि एक प्रश्न है जिसका उत्तर यदि वे देना चाहें तो बहुत रहेगा। स्वाति जी आप हैं अभी यहाँ पर, तो प्लीज अपने आप को प्रस्तुत कीजिए, वीडियो स्टार्ट कीजिए अपना। एक प्रश्न पूछा गया है। हाँ, प्रश्न ये पूछा गया है, एक प्रश्न पूछा गया है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अरबिंदो स्पिरिचुअलिज्म एंड टैगोर। कैन आई आंसर? या प्लीज आंसर। इसका जवाब दूं मैं? जी 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 बिल्कुल। टाइम है। हेलो। हाँ जी बिल्कुल, बिल्कुल दीजिए रंजन जी। Taral sir, shall I repeat the question or what should I do, sir? No, I think she has got it. You start your video and be there. Video cannot be started at the moment. No sir. problem, no problem. रंजन जी आप आंसर दीजिए। हाँ रंजन जी। हाँ जी। आप प्लीज आप आंसर दीजिए। ये आंसर दूं मैं वो प्रश्न का? बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली दो बातें हैं। एक बार टैगोर जी और मदर दोनों साथ में मेडिटेशन में बैठे थे और मदर डिस्क्राइब्स दैट टैगोर could reach up to nirvana, not beyond that, wherever she could go as she used to go. दूसरा, टैगोर ने गीतांजलि लिखा। उनके बारे में उन्होंने अपनी डायरी में लिखा है कि मेरे बाजू में नजदीक में एक बूढ़ा आदमी रहता था कि आफ्टर दिस रिलीजिंग ऑफ गीतांजलि every day he used to just scold me, ask me, have you seen, have you realized, have you seen? So he was so much fed up that he said that I stopped going to the ocean. He tired of this old man. Every time he used to ask, गीतांजलि लिख दिया, क्या जाना है तुझे? One day suddenly there was raining and it was 5:30 in the morning, and that old man was not awake. He was not in his chair. So Tagore was happy. He ran to ocean, and the sun was rising. And as the sun was rising, all the rays he could see, and the light was there in the puddles also. Small, because there was sand everywhere in the ocean also, and even the little puddles that there were, he could see the same light, same rays falling. And immediately he was surprised, and he had the realization of Chandogya Upanishad. Agniryate ko yona bhavanam pratishtha ekam pratirupo bhavuva. Surya Prakash, it reaches everyone, everything, but it does not get spoiled by that particular thing which is illumined by sunlight. In the same way, God also is reflected in every bit, but that God is not spoiled by whether it is Duryodhana or it is Shakuni. Everywhere that particular light does not get spoiled because of the bearer of that light. And he was so happy. He went on, he hugging everything that ever went on the road. And that old man was sitting. And immediately the old man, when saw him, he just ran to him and hugged him. Today you could know what you have written in Gitanjali. You did not write Gitanjali after realizing. So I was asking daily, now you know what is Gitanjali. So this is the difference. I would like to quote. Aurobindo's real spiritualism is a different thing. And as I told you,
it has been described by me also. When yesterday I released the book, this book, On Way to Supermind. And रंजन जी उसको प्रॉपरली सीधा करके लगा दिखाइए, नहीं उल्टा है किताब। हाँ जी जी जी, थैंक यू। But once Dr. Nadkarni was asked a question that one girl, he asked, I don't follow Aurobindo, it's very difficult. So Nadkarni replied that even though you understand or not, read 2 or 3 lines from Savitri daily. And then that consciousness, when you are one with that consciousness will explain to you all the 30 volumes written by Sri Aurobindo. So this is how we have to be like-minded. Like will definitely attract like. So we have to reach higher and higher and higher to be absorbed and immersed in that higher level of consciousness. Thank you. Thank you so much, ma'am. Thank you. धन्यवाद स्वाति जी, आपको भी उत्तर शायद मिल ही गया होगा। रंजन जी बहुत बहुत धन्यवाद। अन्य कोई और कुछ इस विषय पर प्रश्न पूछना चाहता है तो कृपया हैंड रेज करें या अनम्यूट करके बोल सकते हैं। जी, अगर कोई प्रश्न नहीं है तो मैं कहूँगा कि और कोई विचार या कोई एडिशन करना चाहते हो। औरोबिंदो की जो सावित्री epic है, it is almost written like what we study in theosophy about the life after death, or I mean almost the theosophical literature. He has written through Savitri, achievement of death and afterlife and all these things. I had the opportunity to meet Tara Didi, Vijaya Didi in Delhi campus. Tara Didi. हाँ गौतम जी, आपका प्रश्न क्या है, कुछ या ऐड कर देना। आपकी वॉइस चली गई, आप म्यूट हो गए हैं। Same thing which Paramahansa, Ramakrishna Paramahansa also. A lot of great learning from their life. But one thing, what we face today in current generation, it is all the reflection of the past. I don't like the concept of Ramakrishna Paramahansa of marrying a 5-year-old lady and without a marital status, recognizing her as a mother. So these are the impact on the modern society. But still, they are great people. There are great learning from them. I wish all of them good luck. Is there a question or that was just you wanted to add something because in बीच में आप म्यूट हो गए थे, गौतम जी? Yeah. I really like the session. I also congratulate all the speakers also. अच्छा, just you were adding, no question. जी। अन्य कोई स्पीकर्स में से कोई ऐड करना चाहता हो? रंजन जी या भवानी शंकर जी, आप कुछ कहना चाहते हैं और तो अनम्यूट करके कह सकते हैं। कृतिका, आप भी कह सकती हैं। भवानी बाबू अनम्यूट करिए। Yes. आप okay. कहना चाह रहे थे, बोलिए। It is okay. अच्छा, regarding the puja paddhati and the tattva of Sri Ramakrishna Paramahansa, one event was happened, I am going to tell. In the year 1884, some bhaktas, disciples were sitting encircling Sri Ramakrishna Paramahansa, and this discussion was Vaishnava Dharma. The bhaktas, the disciple asked, what is Vaishnava Dharma? Sri Ramakrishna replied, Vaishnava Dharma is nothing but Jive Daya Name Ruchi Vaishnava Seva. What Sri Chaitanya have told to Sanatana Goswami. The Sada Goswami, you might have known. Out of the Sada Goswami, Sanatana Goswami belongs to Odisha, to Baleswar district, Remuna village. What Ramakrishna Paramahansa told that Jive Daya, you have to be compassionate to all these jivas. That is Vaishnava Dharma. Name Ruchi, that means you have to recite the name. These are the nama, the Vaishnava Dharma nama. Then third thing is Vaishnava Seva. This is the TOS. These three things are very much essential in the Vaishnava Dharma.
With this, I conclude regarding the dharma of Ramakrishna Paramahansa. Thank you, thank you. चंद्रकांत जी, शिंदे जी, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? Kindly unmute. Yeah. Ji. Am I audible? Yes, yes. I must congratulate to all these three speakers. Very nicely studied and brought the thoughts. A great souls or yogis. Actually, Aurobindo yogi and Ramakrishna Paramah, he is at that stage of Paramah stage. So all these are experienced and where in the transcendental consciousness. So when we think of this in the light of theosophy, and now in those days there was no word like this consciousness. Ramakrishna Paramahansa or, and even today we are in doubt what is this consciousness at all. J. Krishna said it is a field, a common field for the humanity, human background. So this consciousness, supra consciousness, whatever we say, is really, it is there. We must accept first. Because as a theory, we must accept first, and then we have to practice. And Sri Aurobindo writes in the Life Divine, that is very important for all of us in this Kali Yuga. What he says, our being has to break the wall of ego consciousness. Our being has to break the wall of ego consciousness, which it has created. What it means? Who is going to break this wall of ego? It is not in my possibility. I am not going to break. I means I am identifying with my personality, and personality is not ready to break this. And here our being has to break the wall of ego consciousness, which it has created. So our real being has created this wall of ego consciousness, self-consciousness in the course of involution. When we study evolution and involution, ascending and descending, so our real being has created this wall of ego consciousness, and he is going to break it. Then what is our role? Our role is submission. And submission won't occur immediately unless you realize that it is not your potentiality to break that wall. In that sense, you surrender to that real being, and when you completely surrender to that real being, then perhaps that real being will break that ego consciousness. So our being in the course of involution created this beautiful form of body, and we are identifying with our, say, bodies. And I am saying bodies because we have inherited this one. We are quantitatively inherited. The genetic inheritance is there, that is the quantitative inheritance from our parents. But we have also inherited qualitatively, that is our psyche or samskara. So ego constitutes this animal matter,
quantitative matter and qualitative matter. And to break this wall of quantitative and qualitative, all the 5 elements which are contributing to this quantitative inheritance need to be integrated. That is, water into water, fire into fire, air into air, light into light. This is how it should be integrated. And then it becomes light and we become introvert. At the same time, our qualitative inheritance. What is that qualitative inheritance? That qualitative inheritance is our manabuddhi ahankara. So all this manabuddhi ahankara, chitta vritti nirodha, what we study in yoga, Aurobindo was a yogi, and this chitta vritti nirodha, when actually we achieve to that state, when we really change quantitatively and qualitatively, I am not going to explain this, then we raise our consciousness step by step. It is really, we have descendant and ascending also are there, but step by step we can raise our consciousness. And let me tell you, in the first stage, we are in a stage of denial. We don't immediately submit. And in the second stage, we become little bit efficient, but full of fear. So that is the stage of fear. The first stage is stage of denial, then second stage is stage of fear. And then the third stage is emotional. We go on bargaining and we are go on adjusting with our family members in the workplace, etc., etc. We grow and we try to feel one with this and bring harmony. Then the fourth stage comes where there is little bit stress because we are jumping to the next stage. So there is a little bit stress. And once the fifth stage comes, that is the acceptance. That is what we call self-actualization. So whatever we have studied theoretically, we try to actualize in our daily life. And once we reach to that stage of self-actualization, then from there, we shift to the transcendental consciousness, what Aurobindo used to speak of supra-consciousness. And this also has got, once you accept yourself what you are, it is only then you are ready to submit. It is only then you are ready to surrender. That is the sixth stage. And once you surrender, you get convinced. You have perfect reason with you. So again, with that conviction, you raise to the stage of reason, then you come to the stage of intuition, then you come to the stage of, after receiving the insights and intuition, you go on beginning reflecting on them, and while reflecting, it is this stage where we stage that supraconscious stage, and that is the actual revelation stage. So these are the consciousness stages where one can rise. But before that, we have involved into the matter, and that needs to be purified, and then it is what HPV also says, self of matter and self of spirit cannot meet. One has to submit. So that kind of surrender is found in both these souls. Even Ramakrishna Paramahansa, he studied all those. Let me quote that Ramakrishna Paramahansa also. It is very nice to say here because we have studied. Ramakrishna Paramahansa says, I followed the paths of
Saktas, Vaishnavas, and Vedantis. I realized that there is only one God towards whom all are traveling, but the paths are different. And the world contains a mixture of truth and untruth. Discard the untruth and take the truth. Even in worldly activities such as office, one should have the truth. Truthfulness alone is the spiritual discipline in the Kali Yuga. So this is what, through truthfulness, we purify our mind. And that is how we decondition our mind and we can live in this Kali Yuga. So both these souls, Ramakrishna Paramahansa as well as the Aurobindo, have spoken on this, how we can raise. And mother of Aurobindo, not mother, we know, disciple, she says, Aurobindo gave his life so that we may be born into the divine consciousness. So his whole life was surrender to uplift the humanity. And that is what our Theosophical Society is also aimed, a constant eye towards the progression and perfection of humanity. I am very inspired by the talk of Sister Ranjana. She spoke very well. She is really dedicated to Aurobindo, and she explained very well. And they both, our Bhavani Babu and Kritika, very nicely explained what they want to say in their language. So I am thankful to Taral Munshi ji for giving me this opportunity also to speak on these important days of two great souls on their direction given to the humanity. Thank you very much. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much. और मेरे ख्याल से अगर किसी और को कुछ शेयर ना करना हो तो हम समापन की ओर जा सकते हैं। ऑलरेडी 8:10 तो हो ही रहे हैं। कोई हेलो। हाँ, बोलिए जी अशोक जी। आज का जो विषय है ये दोनों संतत्व को उपलब्ध व्यक्ति है, अरविंदो और रामकृष्ण परमहंस। और मुझे लगता है परमहंस की उपाधि केवल रामकृष्ण परमहंस को ही दी गई है। और आज की जो मुख्य वक्ता थी राजन जी, इन्होंने एक उनकी जो स्पेशलिटी थी, जो बियॉन्ड हमारे जो साधक वर्ग है, कि उनके एकदम क्लाइमेक्स जो है अध्यात्म का, वहां पर पहुंचे वाले लोग हैं। और उनके बारे में एक जानकारी देकर एक विशेष अवसर पर एक बहुत अच्छा उन्होंने हमारे को उनकी जानकारी दी। और जो ट्रांसलेशन भवानी जी और कृतिका ने किया, बहुत अच्छे से किया, पूरा न्याय दिया, और इसके लिए मैं सबका अभिनंदन करता हूं। और तरल जी, इस तरह के अवसर पर आप जो विशेष व्याख्यान आयोजित करते हैं, इसलिए त्रिवेणी का भी मैं अभिनंदन करता हूं। और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया। शिंदे सर ने बहुत अच्छी तरह से उसको डिस्क्राइब किया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी। और आप सभी के आशीर्वाद और प्रेरणा से ही ये सब चीजें होती हैं। मैं अतुल भाई से निवेदन करूंगा कि कोई और नहीं है तो केशवर जी आगे हैं, अगर वो उन्हें आप आमंत्रित कर सकें। केशवर जी, अतुल भाई अनम्यूट। रंजन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने बहुत ही बढ़िया अध्ययन कर हमें आज बहुत कुछ सिखाया और बहुत कुछ जानने का अवसर प्राप्त। नहीं, मुझे नहीं लग रहा है कि वो सुन पा रही है। केशवर जी, केशवर बेन नहीं है।
हाँ है तो सही, लेकिन वे नहीं सुन पा रही, तो मैं अर्चना बेन चाहूंगा कि अर्चना जी आप समापन प्रेयर कर नहीं, रंजन आगे मैम है, आगे केशव जी करने का है, आगे आगे केशव जी समापन। Yes, yes. जी धन्यवाद। Shall I? यस यस प्लीज। Yes. मनोबुद्ध्यहंकार चित्तानि नाहं न कर्णं न जिह्वा न च घ्राणनेत्रे न च व्योम भूमिर्न तेजो न वायुः चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहम् शिवोऽहं 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 चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहम् न च प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायु न वा सप्तधातुर्न वा पञ्चकोशः न वाक्पाणिपादौ न चौपस्थपायुः चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहम् शिवोऽहं 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 शिवोऽहम् चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहम् न मे द्वेष रागौ न मे लोभ मोहौ मदो नैव मे नैव मत्सर्य भावः न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहम् शिवोऽहं 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 शिवोऽहम् चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहम् न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मन्त्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञ अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्तः चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहम् शिवोऽहं 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 शिवोऽहम् चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहम् न मृत्युर्न शंका न मे जाति भेदः पिता नैव मे नैव माता न जन्मः न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यः चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहम् शिवोऽहं 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 शिवोऽहम् चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहम् अहं निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुत्वा च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां न वा संगतं नैव मुक्तिर्न मेयः चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहम् शिवोऽहं 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 शिवोऽहम् चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहम् चिदानंद रूप शिवोऽहम्
शिवोऽहम्। थैंक यू सो मच केशवर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद।